Hello students, welcome to our English class. In our today's English class, we are going to see the question answer section of our chapter number 11. And the name of this chapter is I Wandered Lonely as a Cloud. This is a poem. I hope you all remember. Okay. Now come with me and let's complete the question answer portion of this poem. So students, here first of all, what we are going to do, choose the correct option to complete the sentences. The poet wandered lonely as cloud. Then, which of these flowers did the poet see? Daffodils. There were dash flowers along the bay. So, which option will be correct option? Your menu. Okay, then flowers make the poet happy. Okay, now what is the rhyming scene of the following stanza? I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Okay, so the rhyming scene is AB, AB, AC. Okay, now see, find lines from the poem that mean the same as given sentences. Okay, so the flower were happily sowing. Okay, so which line is going to describe this meaning? The flowers were happily swaying. Okay, let's see. टमाटर प्याज वो लाना, क्या लाओगे? एक एक करके लाओगे, वो तो खराब हो जाते हैं फिर. Fluttering and दे देते dancing in the दुकान वाले. breeze. Okay, this line indicates that meaning. Okay, fluttering and dancing in the breeze. Then the poet saw only flowers as far as he could see, continuous as the stars that shine and twinkle on a Milky Way. Okay. Then the third line, see, watching the flowers were an extremely precious moment for the poet. So, student, the answer of this line, watching the flowers was an extremely precious moment for the poet. Okay. This line is well described in this. What wealth the show to me had brought. Okay. Just thinking about the flowers made the poet happy. So students, ये जो है ये आपकी इस लाइन से well described होती है. देखिए, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Okay, now last, sometimes the poet felt happy in his own company, his heart dancing happily with flowers. Okay, so students, इसका आंसर ये है. देखिए, in such a jocund company I gazed and gazed but little thought. Okay, then and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodil. Okay, so ये जो लाइन है ना, ये आपके दो सेंटेंसेस के लिए परफेक्ट है यहाँ पे. ठीक है, ये आपका 4 में भी है और 5 में भी है. देन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, वेयर डिड द क्लाउड फ्लोट? क्लाउड्स कहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं? तो ये देखिए, क्लाउड्स आर कंटिन्यूअसली फ्लोटिंग ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए. What idea do you get about the number of flowers by the line when all at once I saw a crowd of host of golden daffodils? ठीक है, so कितने सारे यहाँ पे number of flowers हैं? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ये है, poet saw a crowd of golden daffodils, okay, which are located beside the lake beneath the tree. They are fluttering and dancing with the air breeze. ठीक है, चलिए. Now the next, explain tossing their heads in sprightly dance. इस लाइन को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है. Okay. So students, आप लोगों को इस लाइन को एक्सप्लेन करना है. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रेडिंगली डांस. ओके, सो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे, जो ये डैफोडिल्स फ्लावर है. ठीक है, ये डैफोडिल फ्लावर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर मोर देन 10,000 ऑफ डैफोडिल फ्लावर्स. ठीक है, आपसे नंबर भी पूछा था वहां पे, तो यहाँ पे क्या होस्ट है यहाँ पे. So poet saw that there are more than 10,000 of daffodil flowers. They are just dancing and they are tossing their head in
what spreadingly dance means they are enjoying the view. Okay, so here you can see the meaning of sprightly is lively and energetic. Okay, so when the poet saw more than 10,000 daffodils are continuously dancing, okay, they are tossing their heads here and there and they are enjoying their life with full. Okay, they are full of energy. Okay, चलिए अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए और क्या है यहाँ पे. Who was happier, waves or flowers? Give reasons for your answer. So कौन ज्यादा happy था, waves या flowers? So flowers was happier. Okay, and why flowers was happier? Students देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है. See, flowers are happy because they are full of energy. They are living their life with full on. That's why in comparison of waves, flowers are more happy. ठीक है, चलिए. Now the next one देखिए. How did the poet feel in the company of flowers? तो poet को कैसा लगता है? The poet felt very full of energy, full of life in the company of flowers. Then what effect did the memory of the flowers have upon the poet? ठीक है, तो poet के mind पे flowers की क्या मतलब कैसा रहता है, क्या impression है. Okay, so flowers put a bliss of solitude feeling on the mind of poet. Okay, because when poet saw this daffodil flowers, his heart was filled with pleasure. Okay, and he also loved to watch the dance of daffodil flower. Okay, ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है स्टूडेंट्स. Appreciating the poem. Personification is a part of a speech wherein non-living things are shown to have human qualities. So personification students क्या होता है, वो part of a speech होता है जहां पे non-living things को ह्यूमंस की क्वालिटी के साथ शो किया जाता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको इस पूरे पोएम से पर्सोनिफिकेशन के एग्जांपल को फाइंड आउट करना है, एल्टरेशन के एग्जांपल्स को भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, एल्टरेशन क्या होता है देखिए, रिपीटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड इन अ सेंटेंस. आप लोगों ने इससे पहले भी बहुत सारा एग्जांपल पर्सोनिफिकेशन अल्टरेशन का किया हुआ जो कि मैंने आपको बताया है. तो इस पोएम से आप लोग इनके एग्जांपल्स को खुद फाइंड आउट करेंगे. अब दूसरा देखिए, what have the flowers been compared to justify the comparison with suitable examples from the poem. फ्लावर्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है. ठीक है, तो ये देखिए फ्लावर्स को वेव्स के साथ कंपेयर किया गया है ना. फ्लावर्स आर कंपेयर्ड विद वेव्स इन दिस पोएम. और कौन सी लाइंस में किया गया आप इसमें से लेके उस लाइन को बताएंगे. ठीक है, चलिए. नाउ स्पीकिंग एंड लिसनिंग देखिए. Have a conversation in pair about nature. Use the questions given below to build up the conversation. So students आप लोगों को पेयर में कॉन्वर्सेशन करना है और आपका टॉपिक होगा नेचर का. तो ये जितने भी आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे 8 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप एक साथ क्या करोगे, डिस्कस करोगे पेयर में. जैसे पहला है व्हाट आर द फर्स्ट 5 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड टू हियर वर्ड नेचर. ठीक है, दूसरा है व्हाट डू यू अप्रिशिएट द मोस्ट इन अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड व्हाई. Third है what is the most beautiful thing in nature that you have ever seen. Okay, so in this way आप इन 8 questions को you are going to discuss in pair. Okay, now listen to your teacher as she says some word from the poem. Write down their rhyming words. Now write, if you could choose to be a thing from nature, what would you like to be? Write about your thoughts in about 100 to 120 words include. So students ये चारों पॉइंट्स को इंक्लूड करके आपको ये बताना है, आपकी वर्ड लिमिट भी याद रहेगी, याद रखिएगा 100 से 120 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है कि नेचर से अगर आपको कोई चीज का ऑफर होता है कि आप ये बन जाइए तो आप क्या बनना पसंद करोगे. ठीक है, नाउ लाइफ स्किल्स देखिए. इंक्रीज योर आउटडोर टाइम बाय गोइंग ऑन नेचर वॉक्स. टेक अ स्नैक और मील with you to make it a fun activity. ठीक है, enjoy some bird watching or talk about what you have seen or learned. If possible, take photos and share and discuss them as a class. Moreover, it is a great idea to carry some big garbage bag along and pick up the trash you find lying around. So students आप लोगों को अपना आउटडोर टाइम इंक्रीज करना है. पार्क में जाइए, स्नैक टाइम वहीं पे लीजिए, साथ ही साथ बर्ड्स को देखिए आप. ठीक है, हो सके तो आप अपने साथ बड़ा सा गार्बेज बैग भी लेके जाइए कि जो भी कूड़ा कचरा आपको दिखता है आप उसको उसमें रख के थ्रो कर दीजिए. ठीक है, so student this is all about our chapter. Okay, now just go thoroughly through this chapter and complete all the question answers. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then you all have to take very good care of yourself. Bye.